Hello. Appeal under GST is not an easy task. It's very difficult, not so easy. You can't be casual. You have to be very vigilant about this because any order passed by any educating authority, when communicated to you, has to file an appeal within 3 months. This limitation of 3 months very sacrosanct. It can't be enhanced, it can't be increased. The statute provides only extension of 1 month, that's 3 plus 1, and that 1 month is condonable only when there is a reasonable excuse. Then you have to take into consideration that whether the demand which is disputed, you have to deposit 10% of that disputed demand and the whole admitted tax which you admit in that appeal. Secondly, you have to prepare your appeal very nicely. You have to take all the grounds. The grounds should pertain to the assessment order, show cause notice. You have to link both these things, that whatever he has specified in show cause notes, whether he has deliberated on those points or not, if he has traveled beyond that show cause notice, then that assessment order you have to mention in the grounds of appeal. Grounds should be very reasonable. There should be no elaboration in pages. Limited, crisp, brief, and the prayer must be there. You have to be very, very reasonable. You have to be very, very careful about claiming the prayer. Because at the time of filing decision of appeals, the appellate authority may ask, what's your prayer? If simply you say the order may be set aside or quashed, that does not make your case foolproof. Then, after this first appeal, if this order passed by the first appellate authority is not satisfactory or it goes against you, then you have to file second appeal, which is appeal before the tribunal. That's much more difficult because there again you have to be careful. You have to again see whether the order which has been communicated to me, the appeal is to be filed within 3 months of from the date of communication of order. There again you have to deposit 10% of disputed amount, and if the appeal is against penalty only, then 10% of the penalty, otherwise 10% of the total demand. Here you have to see that whether my appeal is correct, limitation is correct. You have to follow the procedures adopted which have been laid down by the rules of filing by the tribunal. In that you have to maintain the format, you have to maintain other things which are prescribed therein. The appeal in second stage, that is before the tribunal, is not free. Here you have to file appellate filing fees, that is rupees 5,000 for a normal appeal or where there is no demand, and 10% again of the disputed amount subject to 25,000, which is maximum. Appeal here can also be condoned by further 3 months, but again there must be a reasonable cause, because Section 5 and Section 14 of Limitation Act does not apply to appeals before the tribunal or first appellate authority under the GST. दोस्तों, जो नॉर्मल अपील में हम क्लेम करते हैं कि भाई लिमिटेशन, रीजनेबल कॉज लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 को सॉरी हम उसकी आड़ में फिर एप्लीकेशन फाइल करते हैं कंडोनेशन, यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लिमिटेशन है पहली अपील में 3+1 और सेकंड अपील में 3+3, ये स्ट्रिक्टली
विद इन द लिमिटेशन है जो सेक्शन 107 और 112 में प्रेस्क्राइब किया गया है। इसके आगे कोई भी ये लिमिटेशन बढ़ा नहीं सकता। हाई कोर्ट्स, बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इस पर जजमेंट्स दी हुई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के हिसाब से ये जो लिमिटेशन है ये हम बढ़ा नहीं सकते और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस, लेकिन उसके लिए भी जो पैरामीटर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के वो अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल में आपने बाज़ाब्ता जो फॉर्मेट के हिसाब से अपील फाइल करनी है, वहाँ पर भी आपने ग्राउंड्स जो है सारे ग्राउंड्स तरीके से लेने हैं। आपने देखना है कि मेरा हर कोई चीज़ उसमें आ गया है। उसके बाद प्रेयर होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए और जो भी आप मिसलीनियस एप्लीकेशंस फाइल करेंगे उन मिसलीनियस एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको एक एफिडेविट लगाना होगा और उन मिसलीनियस एप्लीकेशन की भी फीस हर एक एप्लीकेशन की 5-5 हज़ार अलग से लगेगी। इसके अलावा आपने ध्यान ये रखना है कि जब आप अपील फाइल करेंगे वहाँ से रसीट ले लेंगे। रसीट में जब आप उसमें उनसे ले लेंगे तभी जाके आपकी जो डिस्प्यूटेड डिमांड बाकी की है वो स्टे होगी। अदरवाइज़ आप ये सोचेंगे कि मैंने अपील फाइल करी और मेरा डिमांड स्टे हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप वो रसीद नहीं लेंगे और बाज़ाब्ता उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी वो स्टे ऑटोमेटिक नहीं माना जाएगा। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी जानकारी अपील के बारे में। मैं कुमार जी भट्ट, एडवोकेट, DGST प्रोफेशनल ग्रुप का एक सदस्य हूँ। धन्यवाद।